The Odisha government is taking decisive steps to tackle landslides in the state following the recent incident in Gajapati district. Revenue and Disaster Management Minister Suresh Pujari announced the preparation of a comprehensive master plan to address this growing challenge, particularly in hilly and mountainous areas. The government will identify landslide-prone zones and implement preventive measures to ensure that falling rocks do not cause loss of life. Special attention will also be given to low-lying roads that often get submerged during heavy rains, disrupting connectivity. Instructions have been issued to elevate these roads, with Malkangiri district identified as a key focus area due to its vulnerable routes. District collectors have been directed to access damages immediately and submit reports, ensuring that compensation reaches affected people without delay. Minister Pujari assured that relief measures will begin reaching those affected by tomorrow as the state works proactively to prevent future landslides. दक्षिणांचल राजस्व कमिशनर को निर्देश देती जे गजपति जाकर अवस्थापित होगापाई माननीय मुख्यमंत्री सांगे दुई तीन थर यार समीक्षा आम करूँ आमर दक्षिणांचल मंत्री श्रीयुक्त विभूति जेना खनि एवं परिवहन विभाग मंत्री से दुई दिन से अवस्थापित थिले दिन राति से काम करछंती एबे परिस्थिति संपूर्ण नियंत्रणाधीन एवं गला 24 घंटा भितर विशेष वर्षा नहीं आज विशेष वर्षार सूचना नहीं एबे रहला जे मुख्यमंत्री जो माने मृत व्यक्ति क्षतिपूरण घोषणा कर सारी बाकी अन्य जो क्षतिपूरण राशि अच्छी ताकू आम जिलापाल मान परामर्श दीचु मूलतः रायगड़ा कलाहांडी एवं गजपति ये तीनटा जिलार एवं अल्प प्रभावित होता गंजाम एवं किछि जिला से जिलापाल मान निर्देश दिखाई तुरंत क्षयक्षतिर आकलन करी घर क्षयक्षति हो फसल क्षयक्षति हो तार आकलन करी तुरंत राजस्व एवं विपर्यय विभाग को पठेया।